In this module, we will study what are the accessory proteins which are required to aid RAS-MAP kinase. Now remember, the RAS-MAP kinase or the RAS gene factor is one of the important pathway for controlling the cell signaling. Now the cycling of monomeric G proteins. Again, monomeric जो कि single G proteins हैं, such as RAS, between active and inactive state is aided by accessory proteins that bind to G protein. जो कि G protein के साथ जब वो access जुड़ जाती हैं तो वो इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करती हैं और ये रेगुलेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट. Now these accessory proteins include कौन कौन सी हैं? GTPase, activating protein GAP, guanine nucleotide exchange factor GEFS, and guanine nucleotide dissociation inhibitor जो कि guanine को डिसोसिएट करते हैं, उसको इनहिबिट कर देते हैं. तो ये हैं 3 प्रोटीन जो कि बड़ी important हैं in controlling the RAS pathway. Now most monomeric G proteins ये क्या करती हैं? They possess some capability to hydrolyze a bound GTP. इनकी कुछ कैपेबिलिटी है जो कि GTP को हाइड्रोलाइज कर देती हैं. But this capability is greatly accelerated by interaction with specific GAPs. चूँकि जब ये GTP जो है ये हाइड्रोलाइज हो जाती है तो क्या होता है कि RAS प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव हो जाती है. As they stimulate hydrolysis of the bound GTP, जब GTP का हाइड्रोलिसिस जो है उसको क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, तेज कर देते हैं, जो कि क्या करती है? जी प्रोटीन्स को इनएक्टिवेट कर देती है. अल्टरनेटिवली शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ जी प्रोटीन मीडिएटेड रिस्पांस, जो जी प्रोटीन मीडिएटेड रिस्पांस है उसको कम कर देती है, शॉर्टन कर देती है, लिमिटेड कर देती है. Now guanine nucleotide exchange factor, remember, they are the protein that bind to an inactive monomeric G protein. जो G protein inactive monomeric है उसके साथ ये बाउंड होती है and stimulate the dissociation of the bound GTP, जिस तरह हम पहले कह चुके हैं कि ये उसको stimulate कर देती है GDP को. The activity and localization of these various accessory proteins, they are tightly regulated by other protein. दूसरी जो प्रोटीन्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्टली इसको रेगुलेट करती हैं सेल सिग्नल को, और इट मेक्स देम टू द स्टेट ऑफ द जी प्रोटीन, मोनोमेरिक जी प्रोटीन, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द जी प्रोटीन. Now guanine nucleotide dissociation inhibitor GDIs, they are the proteins that inhibit the release of bound GTP. जो GDP, remember, जो कि bind है फॉर्म में तो मोनोमेरिक GTP, उसको वो इनहिबिट कर देती हैं, उसको रोक देती हैं, और इसका नतीजा क्या होता है? thereby maintaining the protein on the inactive GTP bound state, यानी GDP जो बाउंड स्टेट है उसको वो इनएक्टिव कर देती. Now in this slide we have seen the G protein cycle incomplete, that how the inactive G proteins, they are there, then inactive G protein is there with the GTP, it goes further, active GT protein and GTP is formed, and activators and various inhibitors, they act with it, and eventually there is inactive target proteins which are released, and there is a signal transmission which is in the downstream. In the middle you can find that the GTP and the active spot or active proteins that is joined with them, and the signal transmitted is downstream
ٹو دا سیل کہ سیل کے سگنل جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. نو دا ایکٹیویٹی اینڈ لوکلائزیشن آف دیز ویریس، یہ جو ایکسیسری پروٹینز ہیں جو کہ ہم نے دیکھا کہ کتنی پروٹینز ہیں ان کی دے آر ٹائٹلی ریگولیٹڈ بائی ادر پروٹین. یہ دوسری جو پروٹین جو پریزنٹ ہیں ان کے ساتھ یہ ریگولیٹ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ یہ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، کنٹرول کرتے ہیں. اینڈ دین ایونچولی اٹ ریگولیٹس دا اسٹیٹ آف دا جی پروٹین. جو جی پروٹینز ہیں ان کی اسٹیٹ کو یہ ریگولیٹ کرتے ہیں جو مونومیرک ہیں.